Hello and welcome back, folks. You are watching eISL Season 2, and we are into our final day of this entire campaign. Today is the night where we finally crown our champions and get to see which club will represent India in the FGS play tournaments. And we did have our semi final number one, and we did find our decisive winners. It was Bengaluru FC. Now it's time to find who they are going to face against, as the matchup is Northeast United FC going up against Kerala Blasters FC. Of course, in leg number one, we did have Northeast United FC beating them 3-0. So they're just one game away from securing their berth in the grand finals. But Kerala Blasters FC, a very uphill task for them. And TT, what do you feel? Can Kerala Blasters FC do it, as we take a look at the previous matchup scores? प्रीवियसली अगर देखा जाए तो एक चीज तो हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एक तरफा डोमिनेट करके गए थे कल के दिन में। हालांकि लुकमेनू की तरफ से काफी बेहतरीन अप्रोच देखने के लिए मिला था। पर देखिए हाँ, एक गेम सिर्फ जीतना है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को, तो मुझे लगता है कि इस पे शायद केरला ब्लास्टर्स से लाइक पहले जो गेम्स है वो हम लोग को जीतते हुए दिखे या फिर क्लोज पहुंचे, बट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं है। इधर से क्वालिफिकेशन के लिए अगर मैं किसी को थोड़ा बहुत रखूंगा तो मैं तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को ही रख रहा हूँ, क्योंकि उनका पूरा सीजन अगर देखा जाए या फिर उनका इंडिविजुअल गेम, उनका केमिस्ट्री, वो सब कुछ ऑन पॉइंट हम लोग को देखने के लिए मिला है थ्रू आउट द सीजन भी और कल के दिन में भी। बट आज केरला ब्लास्टर लाइक उनको तीन में से तीनों के तीनों गेम जीतना है, उसके बाद कोऑप पे जाके भी जीतना है। आई थिंक टफ लग रहा है थोड़ा। It could not get worse than this for Kerala Blasters FC, to be honest, right? Because they don't even have a single margin of error, considering that already they're 3-0 down. This time, Shubham is going to be taking on the first helm. He is going to face Imad Rocks, a player that plays with so much flair. And, the way he clutched it against Lokmanu, I think was one of the best goals that I've seen under pressure he scored. But this time, Shubham, he went off against Saranj Jain last night and it was too hot to handle, and Saranj was literally in the mood of scoring goals for fun. But this time, I think Imad has got a perfect chance. All he's going to do is beat Shubham, and then they do not have to play game number 2 and game number 3. So Imad can seal the deal right here, right now with just game 1, but Shubham will somehow try to push it a little further. Now they will be taking one game at a time. I think that is pretty much what they will have to say right now. Yes, it's going to be tough, but I'm pretty sure, some might say it impossible. But like I've said it earlier, right, Kerala Blasters FC still fancy their odds. अभी तक जिस जिस जगह से वो वापस ही किए हैं, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि क्या एक बार फिर से हो जाएगा। अगर वो इधर से कमबैक हो पाते हैं, देन इसके बाद और कुछ बचेगा ही नहीं शायद हमारे पास। लाइक हम लोग क्या कह के इनको बयां करें, क्योंकि इस जगह से ऑलरेडी वो एक बार लीग स्टेज के अंदर लाइक इतने पीछे चले गए थे, उधर से कमबैक किए। उसके बाद कहीं न कहीं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नॉकआउट्स के अंदर, एंड देन जाके भी 3-0 से जीत गए। बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि हर बार की तरह शायद इस बार जो है वो कहानी नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस बार आपको सिर्फ 3 में से 2 नहीं, 3 में से तीनों के तीनों जीत आप फर्स्ट लेग एक भी गेम नहीं जीत पाए हो। सो आई थिंक बहुत टफ होगा, बट शुभम वो किस तरीके के अप्रोच के साथ जाएँगे वो देखना होगा, क्योंकि अपोज़िट पे इमाद है और इमाद सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कंट्रोलर के साथ नहीं खेलते, वो ओपोनेंट के दिमाग के साथ भी खेलते हैं। तो किस तरीके से वो कंट्रोल कर पाएँगे इधर शुभम, किस तरीके से वो गेम पे रह पाएँगे, वो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। Yeah, I think especially with the change in the playing order that Kerala Blasters FC have made, it's going to be quite interesting in the sense that Shubham did have one thing to say, right? Every single time Kerala Blasters FC let Lokmanu go first, and if they look at their stats, they've performed better. But this time, when it has all boiled down to just that one game, Shubham wants to be the one who leads them into victory, and then they think about what they have to do next, right? There's no contingency plan here. For Kerala Blasters FC, they cannot afford to lose even a single game from here onwards. They have done it in the past when they were being crushed. They managed to come back, but can they do it tonight? I mean, lots of questions out there. I'm pretty sure Suyash will get us some answers.
Well, that's the intention fixes. I have Lok Manu here with me as well as Imad. Of course, you know Northeast United FC are 3-0 ahead at this point of time, which means that even if they win their first game, they qualify for the final automatically. So in that context, Loki, what is the mindset like right now? Nothing to lose, more like? Yeah, absolutely. I think we said this before the start of the game. Northeast is a very strong team, and even against Mumbai, the way we qualified as well, I think we're taking one game at a time. So, like I said, miracles do happen, and if we do our best, take one game at a time, we can come back into the fixture. Imad, more of the same for you guys? Yeah, we can't underestimate anything. We do have a 3-0 win over them right now, but they've made it to the semis and we can't underestimate it. Underestimate them. And what's the conversation that you've had with George, your coach, in the build-up to day 2? I mean, again, it's the same plan. Just get it done with. Don't leave it to the last game. We can't take any risks. So yeah. And what have you told Shubham ahead of the first fixture, Loki? I know you are in deep conversation with him often. You guys are very close. You talk about a lot of things. How have the last 24 hours been, and how have you reflected on how you can bounce back? Yeah, so if you see the last yesterday's fixtures, every game was really close, and it was by 1 goal margin, and it was really close. I mean, every single game. So that's what I've told him, that don't have any pressure on you that if we lose, we're out, because then we're eventually out only. So you have to do your best, give your best shot, and if you win, then there's another story. I mean, if we bounce back and miraculously take it to the last game, then there's another story. So we'll try for the best, but let's see. In the build-up to day 2, of course, we've been reflecting on how all the teams have been doing. In Kerala Blasters, almost didn't qualify for the playoffs, qualified and now in the semi. So the messaging is loud and clear, nothing to lose, play all you want, and then we'll see where it goes from there. At least that's what Loki is saying. Imad, more of the same from you, and may the best team win. That's it from me, back to the casters. All right, again, pretty much the same dialogue that every single player had been using in the season 1 eISL interviews, one game at a time. And yes, I think it has boiled down to that, at least for Kerala Blasters FC. And I kind of resonate with what Lokman you said, right? Every single game, TD, even you would agree, was really close, right? The margins were so thin, because even Lokman playing so well against Imad last night, but Imad, that final flare move, just changing his legs, scoring that goal. I think Lokman did not see that coming. A little bit of a head-to-head, of course, 76-47. Let's throw that out of the window. I really do not care about stats at this point, because, at the semi-finals, we just saw FC Goa, a club that has been unbeaten throughout the league stages, finally have crashed out of the grand finals. And Bengaluru FC lies seating just one game away from clinching that title. CJ, he's on fire. I'm pretty sure Northeast United FC would want to settle the scores with Kerala Blasters FC, instantly win that game, and then go on their redemption arc. Because if you remember, TT, in that first game where Saransh and CJ had fought off against each other, CJ had completely annihilated Saransh. So surely Saransh would want to get some pie there. But for now, there it is. Shubham and Imad Rocks. Tell me something about these two players. देखिए दोनों ही प्लेयर्स अपने क्लब के लिए लाइक बहुत बहुत कुछ निकाल के लेके आए हैं, बहुत सारे बेहतरीन आउटकम्स दिखाए हैं। बट हाँ, अगर हम लोग इधर बात करें शुभम की, तो शुभम का जो कहानी था, उनका जो सफर था, वो बहुत ही ज़्यादा कांटेदार था, और उसके बावजूद भी वो आज इधर सेमीफाइनल पे खड़े हुए हैं। तो यही मुझे लगता है कि वो उनको एक कॉन्फिडेंस लेके जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड हम जानते हैं इमाद रॉक्स लाइक उनके हाथ में जादू है। वो कब किधर से क्या कर देते हैं, वो समझना ही अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। और आई थिंक यही चीज़ हम लोग बार-बार कहते हुए आए हैं पूरे लीग स्टेज से। क्योंकि ये प्लेयर ही ऐसा है कि इनको अगर आप बयाँ करने जाओगे देन आपको वर्ड्स कम पड़ जाएगा, क्योंकि वो कब क्या करते हैं वो शायद किसी को भी नहीं पता होता। वो सिर्फ उनके दिमाग में एक मैपिंग करते हैं, इधर से ये कर सकते हैं, उधर से एक रन ट्रिगर कर दिया, और उसको कब जाके बॉल को पकड़ लेते हैं एंड फिर से लूप कर देते हैं, वो सिर्फ उनको ही पता है। तो बहुत ज़्यादा शानदार कहने की अभी तक का सफ़र रहा है इमाद की तरफ से भी। बट शुभम आज उनके लिए ज़रूरी है, जो इतने दिनों से वो करते आए हैं, डू और डाई सिनेरियो पे अपने क्लब को बचाते हुए आए हैं, तो उनको एक बार फिर से वही सेम रोल अपनाना होगा और इधर से जीत के जाना होगा। Oh yeah, I think for Shubham, to be honest, he has to play like there's no tomorrow for him. And I think Shubham is a player
that has played so much under so much turmoil, under so much duress, that he can really handle the situation. I feel like from the back of my head, I guess Shubham has got something up of out of Imad. But that is not where it ends, right? It's just that first hurdle they clear, because then they know they have to go on a co-op matchup in which Northeast United FC is one of the finest clubs in the eISL so far. And then they'll have to figure that one out, and then it is going to be an ultimate showdown between two of the oldest players, Lokmanu and Saranchen, fighting for that equalizer, at least for Lokmanu. But for all that to happen, I guess Shubham needs to start off with a win. And like you said, right, Imad is a player that has always got some tricks up his sleeves. You know, so many variations of attack. And this is kind of like the matchup that I was really waiting for, because Shubham, I can say, equivocally is also a same player, right? He also has a lot going up in his minds. He can instantly switch his styles of play. He can get in the long balls. He can go for those skill moves. He can go for those cutbacks. He's got what it takes to finish the ball. I think somewhere at the back of my head, I feel it's going to be a high scoring game, but it is definitely going to be a fun one. The fans of Kerala Blasters FC have been constantly pushing them so far, and today is one of those evenings where they need the support the most. But for Northeast United FC, just a step away from going into the grand finals for the first time. Saranchen, he's been here but in different colors. But off we go, folks, with the first game kicking off. Northeast United FC from left to right, and Kerala Blasters FC from right to left. आज कहने के अप्रोच शायद अलग देखने के लिए मिले इमाद की तरफ से। इमाद यूजुअली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेलते हैं, कभी-कभार वो बॉल होल्ड करके खेलते हैं, बट शायद आज अपने डिफेंस के ऊपर भी ध्यान देंगे। लेकिन उसके पहले ये फर्स्ट अटैक क्या रोका जा सकता है शिवम की तरफ से? अभी भी बॉल मौजूद, मुश्किल है और गोल कर दिया जा चुका है। इमाद ब्लॉक एंड वो कहीं न कहीं ये डिलीवर कर चुके हैं मैसेज। देखिए डिफेंस तो हम करेंगे, लेकिन उसके पहले आप गोल संभालिए। I think you could see one of those things which Imad did over there. He's playing a little different. He's going for a lot of dribbling inside the perimeter, and he's created so much of that dribbling space that he simply found the pass there to Willet, and all he had to do was take that shot. It was surely not green time, but Northeast United FC have already put their claws in to the grand finals, 1-0 up, and Imad, he's clearly playing without any pressure. But it is completely the opposite for Shubham, and this is where he gets to kind of redeem himself with Lionel Messi. Takes that shot, still somehow has kept possession, but seems like he is offside with Ronaldo. बात है 8 मिनट के अंदर पहला गोल आ चुका है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड अगर ये गेम जीत जाते हैं देन उनका पोजीशन जो है वो बन जाएगा ग्रैंड फिनाले के अंदर, जिधर ऑलरेडी बैंगलोर एफसी वेट कर रहे हैं। देखिए टुवर्ड्स लियोनेल मेसी, एक मौका बनता हुआ, लेकिन बैक पास करेंगे और बॉल पोजीशनिंग जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करते हुए, बट शुभम आई थिंक लाइक वो जस्ट साइड पे बैठ के पूरा एक्शन देख रहे हैं, क्योंकि उनका रोल कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है इस गेम के अंदर। वो डिफेंस के लिए वेट तो कर रहे हैं, लेकिन oh my God! दूसरा आ सकता था, बट इस बार क्रॉस बार हेवियर रहे शुभम के। Oh my God, that heat is over there. And Imad, I think we know what he's up to, right? Clearly, he's going quite conventional. Just get into the box and become common ticker. We know we've seen common ticker do this a lot, and that is sometimes so difficult to deal with, right? If you could just 1v1 against a defender and beat him, dribble past him, and then take a shot. But this time it's a cross going in with R9, took that shot, but Donnarumma by the whiskers somehow managed to save. And this is where, Shubham needs to take that pause. He needs to take that pause, rethink his approach, because Imad, he's been quite in control over this game right from minute one. देखिए इधर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से तो प्रिपरेशन चल रहा है कि और 2-3 गोल किधर से आगा जा सकता है, तो ये बातचीत चल रहा है। बट ऑन द अदर हैंड इधर लोग मैनू जैसे कि वो आए थे लाइक इंटरव्यू पे उन्होंने कहा कि हम लोग 1 मैच एट अ टाइम लेंगे, अगर कुछ
मिरेकल होगा देन हम लोग फोर्थ मैच के लिए ले लिए। तो कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड केरला ब्लास्टर को पता है लाइक वो उतना ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं खेल रहे। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप 3 मैच के प्रेशर लेकर आप 3 मैच से पीछे हो, ये इतना प्रेशर लेके खेलो, आपके लिए सिनेरियोस बहुत ज़्यादा साउथ होता हुआ दिख सकता है। पर आज मुझे लग रहा है कि उतना ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं खेल रहे हैं एंड उनको पता है लाइक जो कुछ भी हो, वो झेल लेंगे। लाइक उनको पता है आउटकम क्या-क्या आ सकता है। तो इसी वजह से कहने के कमबैक भी कहने के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं तो एंड लेट्स सी आता है कि नहीं। And now Shubham again trying to create a chance. He also did that in the last attack that he's tried to force. But this is where you kind of tend to overthink. But this time the pass looks really promising with Lionel Messi had to score on that first attempt. Goes for the second time. But this time Van der Sar comes in to rescue. And the Highlanders still flying pretty high. Imad rocks. This time another variation, a longer ball being played with Theo Hernandez, but the defense line is back, and now he has to create or carve his way through the defense. But now, I think Imad, you could see he's quite poised, right? He's not under pressure at all. He's taking his time, building his play up, right from scratch, and nice step over, has controlled the ball with R9. Heel to heel, takes that shot, but Theo Hernandez instantly intercepts it away from danger. But just when we could think that Shubham gets to build another attack, Imad steals it away and constantly keeps on pressing at Shubham's direction. Now with Ronaldinho has gone in pretty close, wanted to get past, but no, Donnarumma denies it again. आज गोलकीपर एंड उसी के साथ-साथ ये क्रॉस बार बहुत ज़्यादा टाइम इधर बचाते हुए दिखे है शिवम को। तो जब बाकी सब कुछ अलाइंड है, उनको बचा रहे हैं, देन उनको भी आगे आके इधर गोल स्कोर करना होगा एंड उसी की ही कोशिश अभी फिलहाल के लिए चलता हुआ, बट नहीं, एक गलत जगह पे आप बॉल लूज कर दिए और जिसके वजह से इधर बॉल कंट्रोल गया। आई नो लाइक वी नो कि इधर इमाद जो है वो काउंटर पे जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि काउंटर पे अगर बॉल मिल गया तो वो दौड़ के चले जाएंगे। वो जस्ट होल्ड करते हैं, वो प्रॉपर टाइम के लिए वेट करते हैं और जब मिलता है देन वो एक पास के साथ फिनिश करते हैं। इस बार फिनिश भी करेंगे, दूसरा गोल और कमबैक का कितना भी रास्ता था धीरे-धीरे करके कम होता हुआ केरला ब्लास्टर ऐसी शुभम टम उनके लिए प्रेशर का पहाड़ उनके ऊपर टूट के गिर चुका है और इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक चांस है कि आपको एग्रेसिव जाके गोल स्कोर करना है। गोल अगर नहीं आएगा देन गोल रोक के भी आप प्रेशर रिलीज नहीं कर पाओगे। I think we can see two contrasting emotions right now. On the right hand side, you could see Imad pretty chill. You know, he has his set plan figured out. But for Shubham, I must still say he's not really out of the game because on the two attacks that he went on, he went really deep. And the only problem where Shubham is facing right now is in his finishing. He is overthinking there, where he could just take his shots. And defensively, I think he's got to play a little proactive. He just cannot let Imad dance in the final third, right? He just cannot let Imad do whatever he has been doing so far, right? He needs to go for those tackles. He needs to kind of put those restraints on him. As KBFC already 2 goals behind. Still a lot of time to go into this game though. But Imad, he's kind of playing right now. I'm pretty sure he wants to score a few more goals before we approach the end of the first half. 36 मिनट्स का गेम ऑलरेडी हो चुका है। फर्स्ट हाफ खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है, बट उसके बीच में एक अच्छा देखिए कोशिश बन रहा था, बट वही हो रहा है लेकिन आखिरी मोमेंट पे जाके वो स्टिक नहीं कर पा रहे अपने पासेस के ऊपर। एक मिस पास हो रहा है और जितना भी अटैक इधर बिल्ड हो रहा है वो सारा का सारा कहने के खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक इधर शिवम को अपने अटैकिंग थर्ड के ऊपर जो फिनिशिंग है उसको और थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा एंड आई थिंक सेकेंड हाफ पे वो एक स्ट्रॉन्ग कमबैक जो है वो जरूर करना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले मौका और कैपिटलाइज किया विद लियोनेल मेसी 2-1। एक मच नीडेड गोल उनको मिला है और क्या ये वो कहानी का ट्विस्ट है, क्या कमबैक स्टोरी इधर से ही लिखना चालू होगा। लेट्स सी क्या होता है। Yeah, I mean, at this point they need more of this from Shubham. I told you, he was getting into Imad's head. All he needed was to finish it off, and he's done for the first time. And
Another attack being created, some room around that left wing. He's triggered for a run, but who does he pass on to? And this is where he's starting to overthink again. But with Theo Hernandez, tries to go for a cutback, gets it on towards Lionel Messi. From here onwards with R9, needs to find some room. But there you go, with Jude Bellingham. Imad trying to apply some pressure. Back and forth passes again, but Messi, too much for him when you've got Virgil van Dijk screening you out there. As Imad sets free, but there you go, the first half whistle blows. And as it stands, Kerala Blasters FC just one goal short from equalizing. And it's not going to end over there, right? For Shubham, he has to be clinical, he has to be decisive. And it's kind of one of those games where both these players have had those defensive lapses. It's just that Imad has been more poised and more controlled in that final third than Shubham. If Shubham can fix that issue, I think the second half could be his. जी हाँ, हो सकता है पॉसिबली, लेकिन उनके पास जा सकता है सेकेंड हाफ। लेकिन देखिए अभी और बट पे कोई भी सिनेरियो बचा नहीं है। अभी जस्ट उनके पास 45 मिनट्स है, उनको कोई भी गोल कंसीड नहीं करना है और 2 गोल स्कोर करने हैं। उनके लिए टारगेट अभी रेडी है और सिर्फ बचा हुआ है 45 मिनट्स। नहीं तो ये आखिरी 45 मिनट्स हो सकता है केरला ब्लास्टर्स के लिए ये एआईएसएल सीजन 2 के अंदर। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर कहने के उनके ऊपर है। और ऑन द अदर हैंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, सारांश एंड उनके कोच लाइक दोनों ही इधर समझाते हुए लाइक कौन कौन से पोजीशन पे गलती हो रहा है इधर इमाद की तरफ से, तो उसको कहने के इमाद जो है वो फिक्स करना चाहेंगे। क्योंकि हम लोग आखिर में लाइक फर्स्ट हाफ के एंडिंग में देखे कि शुभम की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अटैक इधर बनता हुआ दिख रहा था। Yeah, he's been creating that, and it's not like, you know, Imad's is getting away with the defense or something. He's having trouble, but I feel like Shubham needs to keep a little bit more of that composure. If he can do that, I guess the equalizer is not far away. Manjapada Tuskers need to manifest all their energy into Shubham because he could be their savior for the night as he goes in for another attack, this time from that left wing. Wanted to ball roll scoop and get past right back, but that did not happen. Still goes out for a corner. Let's see. It's got good bullet in the center. So still goes for a short corner. Team with Ronaldinho has beat Imad's Ronaldinho with Lionel Messi. Looking well under pressure there again. But this is not Shubham playing in his natural element. This is where Imad, I think, is capitalizing on those small mistakes that Shubham has been committing. बट अभी तक इमाद को उतना खुल के खेलने का मौका नहीं दिया गया है शुभम की तरफ से, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली प्रेस कर रहे थे। बट फाइनली इस बार उनको मौका मिला। थियो हर्नांडेज लेफ्ट हैंड साइड से आगे निकले, बट बॉल छीना गया रुलीत के थ्रू। बेहतरीन डिफेंडिंग फ्रॉम साइड ऑफ शुभम, बट इस बार काउंटर पे शुभम, बट नो, बॉल लूज कर देंगे। बॉल लूज आप नहीं कर सकते। और फॉर न्यूरल मेसी स्पेशली लाइक आप थ्रू बॉल्स तो खिलाओ, दैट्स ओके, बट अगर आप लॉन्ग थ्रू बॉल्स खिलाते हो उस पे चांसेस कहीं ना कहीं 60-40 हो जाता है, जिधर 40% चांस रहता है कि सिर्फ लाइक बॉल उधर पकड़ पाएंगे। कि देखिए फिजिक जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेंथीनेस मैटर करता है। इस बार मौका बना लिया था, बेहतरीन लास्ट मोमेंट डिफेंस देखने के लिए मिला शुभम की तरफ से, जो अभी भी उनको जिंदा रखे इस गेम के अंदर। This is more like it. This is exactly the Shubham I wanted to see from minute 1. Now he's getting a little proactive in terms of his defense. No. And Imad taking that shot, but barely missing. And goes away for a goal kick. But Shubham, I think he knows, he can feel the omen. The force stands with him right now. He needs to capitalize. Because one more goal, if Shubham can score that equalizer, then the winds turn, and that could be in his favor, and Shubham could go on to score the winner. We have seen him, do the inevitable sometimes. We have seen him, surprise us on multiple occasions. But will that be one of those? That's the big question over here. And especially even Imad, we haven't seen that style of play changed, right? He's been sticking to the basics, and he's been getting it right. And if he keeps getting deadly like this in that final third, he is bound to score one more. So Shubham needs to quickly find his way through and score that equalizer. And then I think he can think of the prospects of trying to go and score a winner. So far, I think commencement of the second half,
KBFC had been dominating for a while. They'd been trying to get into the heads of Imad, but now seems like Imad is fighting back. इमाद गेम का जो कंट्रोल है वो फिर से एक बार ले चुके हैं बट यस मैं इसी के बारे में सोच रहा था लाइक फ्रेश लेग्स आना चाहिए चेंजेस होंगे और विद दैट हालैंड आ चुके हैं फ्रॉम साइड ऑफ इमाद तो ये जो चेंजेस है ये ज़रूरी था इसे भी मोस्ट प्रोबेबली देखने के लिए मिल रहा है इधर शुभम की तरफ एकदम राइट साइड पे इधर एज अ स्ट्राइकर उनको खिलाया जाता हुआ सो डबल स्ट्राइकर के साथ जा रहे हैं और देखिए एक बार लाइक फुल्ली अटैक पे जा चुके हैं हाई प्रेसिंग गेम इधर दिखाते हुए एम्बापे टू बेलिंगम जस्ट लेफ्ट साइड पे यूसेबियो मौजूद थे बट विद रुडुलीत 1-2 करने की कोशिश इधर से जगह मिलेगा मिल चुका है और गोल भी होगा Yes. बेहतरीन पोजीशन वो जो ढूंढ रहे थे शुभम ढूंढ रहे थे इधर से कि थोड़ा सा उनको मौका मिले वो मौका उनको मिला कैपिटलाइजेशन आया उनके तरफ से And this is where Shubham knows that he's ever so close, and this was such a much more composed build-up from his side. Of course, wanted to go for the step over and then a shot, but it was kind of deflected out. He poached the ball, and this time he made sure that does not miss. And we're back level. 68 minutes already into the game. Final 22 minutes remain, and Imad out for blood. But right now, like I said, the momentum has shifted in Shubham's favor. And he's got to capitalize. A little bit of a run triggered on that left wing, but decides to go for Eusebio. Has lot of space around that right wing. Goes in with Kylian Mbappe, but that ends as an offside. काफी बेहतरीन मोड पे जा चुका है ये गेम कोई भी तरफ ये गेम अभी इधर से मोड़ ले सकता है लेकिन अगर देखा जाए शुभम यानी कि काफी ज्यादा बेहतरीन मोमेंटम में इधर दिख रहे हैं और जिस तरीके यूज के इमाल आई थिंक उनके लिए मुश्किल होगा साइड से एक्सप्लॉइट करते हुए पूरे पोजीशन को बट शॉट लेने की कोशिश रिफ्लेक्ट हुआ जंप करते हुए दिखे सारा का सारा जितना भी कुछ हो सकता है गेम के अंदर सब कुछ होता हुआ दिखा डिफेंडर खुद जाके जंप करके गिर गए जिधर कॉन्टेक्स्ट था फिर उसके बावजूद भी इधर गोल नहीं था कि स्कोर लेवल आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई I don't know what's going on in this game. You could see those small mistakes being made, but Shubham not able to press on that, not able to capitalize on that, and suddenly is vulnerable to another counter-attack from Imad's side. Pass on to Jude Bellingham, back and forth to 1-9. Now Imad wants to go for a slow build-up. He's trying to force one of Shubham's defender coming up. It was Rudhulet, but this is more like it. And now he's got that room with Eusebio, can go in, but no, still taking his time with Ronaldinho, trying to go for a cutback over here, has given the right pass. Eusebio needs to fight for the ball, but no. Van der Sar steps in, and out it goes for a short corner. मौका इधर कहने के बन चुका है बहुत अच्छा अभी बॉल कंट्रोल रखना सबसे ज्यादा जरूरी शुभम वही करते हुए 1-2 Eusebio आगे निकल चुके हैं ओह माय गॉड पहले से समझ लिए थे कि इधर शॉट आ सकता है गोलकीपर को लाइक कंट्रोल किए थोड़ा राइट हैंड साइड पे लेके गए और उधर से बॉल बचाया गया सेम चीज पिछले मैचअप पे दिखा था जो सागनिक पहले ही समझ लिए थे कि आदिजिमा वो कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे जाके शॉट लिए बट इस बार वो शुभम नहीं समझ पाए कि इमाद अपने गोलकीपर को कंट्रोल करने वाले हैं आखिरी 4 मिनट का गेम बचा हुआ है कोई भी तरफ जा सकता है जो कोई भी इधर गोल दागेगा वो ही विनर हो सकता है आखिरी अटैक फ्रॉम द साइड ऑफ केरला ब्लास्टर्स एफसी रोनाल्डिनो के पास बॉल कंट्रोल अभी रहेगा क्या वो इधर से एक विनर दाग पाएंगे नो इंटरसेप्शन आता हुआ इमाद की तरफ से Shubham had this tenacity and Imad's never give up attitude as well. You could see it's thunderstorm in the stadium already. A nice chance, a very good build up for Shubham. But Imad's Maldini, ever so resilient. A lot of pundits had already disregarded Kerala Blasters FC from even making it to the playoffs. But these lads have been writing their own story, have been etching their own script. They've made it to the playoffs. Now on the verge, on the brinks of facing defeat. Shubham is still fighting back. As you can see, this now goes on and on.
this point just could be anybody's game. Extra time comes up. We have seen that extra time drama. We've seen goals being scored from both the sides. Folks, are we looking at a pen as well in this matchup? अगर हुआ तो मजा ही आ जाएगा क्योंकि पिछले पेनल्टी में जो सिनारियोज हम लोग को मिला था आई थिंक उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि केरला ब्लास्टर्स एफसी के पास और कोई सेकंड चांस नहीं बचने वाला है तो यहाँ कहने की प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा है एक्स्ट्रा टाइम पे पहुंच चुके हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इमाद रॉक्स उनको पता है जस्ट उनको ये 30 मिनट के अंदर एक गोल स्कोर करना है और उसको डिफेंड करना है बट ऑन द हैंड केरला ब्लास्टर्स एफसी उनके ऊपर प्रेशर इसीलिए भी बढ़ रहा है कि सिर्फ ये 30 मिनट्स नहीं अगर वो जीत भी जाते हैं देन नेक्स्ट गेम भी है ऑन द लाइन बट हाँ अगर वो वन मैच एट द टाइम जैसे कि वो कह के गए जो कि हम कह तो देते हैं बट कभी कभार बैक ऑफ द माइंड आ जाता है अगर उस चीज को साइड पे रखे कूल एंड काम रह सके शिवम तो मे बी उनके तरफ से काफी अच्छा गेम दिख सकता है क्योंकि आज के इस मैचअप के अंदर श्योरली हम लोग शिवम की तरफ से बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम देखने के लिए मिला Yeah, I think Ahmad has been content so far by Shubham, especially after conceding the first two. Shubham getting back into the game somewhere down the line. Maybe the universe starting to align with him. But cannot afford to make these mistakes against Ahmad because he is bound to get punished. That long stride run with Erling Haaland will now try to seal the deal somehow. Virgil van Dijk and Donnarumma save Shubham from the grasp, the cold embrace of defeat. How is he getting away with this? I have no idea. But he's doing it. आज ये आई थिंक 4th टाइम था जिस जगह पे शुभम बाल बच गए आई थिंक शुभम के लिए जैसे आपने कहा लाइक पूरा यूनिवर्स जो है वो अलाइन होना शुरू हो चुका है मे बी यस शायद उनको ये यूनिवर्स एक और मौका देना चाहते हैं कि जाओ तुम बैक करके दिखाओ बट कितने देर तक वो रोक पाएंगे इमाद बॉल छीन चुके हैं काउंटर पे जाते हुए देखेंगे एम्बापे का रन देखने के लिए मिलता हुआ बट नो कोई और टाइम अगर होता तो वो हॉलैंड के लिए पास खेलते बट वो इस बार एम्बापे के लिए खेले बॉल छीना गया काउंटर पे शिवम विद एम्बापे नो इस तरफ एक बेहतरीन सेव जिसकी वजह से स्कोर अभी भी सेम लेवल पे है एंड वो आखिरी गोल इसके तरफ से आएगा अगर नहीं आता है देन पेनल्टी रोमांच बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है My God, this game. Shubham really initiated a nice counter attack there, but even Green timed the shot, but the angle was just not there. He fancied his chances, hoping that Lady Luck would kiss him for good, but now would face a sucker punch as Imad tries to go in. A very crucial tackle. It was fair, but Shubham, it was too much for him. Rani just puts the ball out of the play, and with that, first half of the extra time gets over. So Ranch can feel like Imad's kind of feeling the heat right now. But we have seen Imad even yesterday when it mattered. He clutched it out against Lokmanu. A Lokmanu that was phenomenal than ever. The finest of Lokmanu I had seen last night, especially that win over Crusher. Even against Imad, he made so less mistakes. But still, Imad always is a step ahead. Now Shubham, he's making things happen in his favor. But all he needs to do is convert that one chance into a goal. He needs to find a way to break through, to breach through Imad's defense and score it for his fans, for himself. Like I said, this man has been tenacious. He's been showing signs of resilience. But Imad also understands he cannot get complacent. One bad move and suddenly Kerala Blasters FC will be back into game. We're off with the second half of the extra time, a half that can decide the fate of both these clubs.
एक्स्ट्रा टाइम के सेकेंड हाफ शुरू होते ही इमाद बॉल कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा रख रहे हैं, जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि 15 मिनट का गेम रहता है। उसके अंदर आप नहीं चाहते हो कि ओपोनेंट के पास ज़्यादा बॉल रहे और आप एक फिनिश करो प्रॉपर अटैक पे। मौका बन चुका है, शॉट भी लिया जाएगा बट ऑन टारगेट नहीं। इसके पहले कई बार वो टर्न करके शॉट लिए हैं लेकिन वो ऑन टारगेट फिनिश हुआ है, बट आज वो कुछ भी नहीं दिख रहा। शुभम रेडी हो चुके हैं पर नो, इधर पहले थियो निकल चुके थे, ऑफ साइड ट्रैप पे थे जिसकी वजह से वो बॉल रिसीव नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई गोल लाइन के बाहर मौका बनता हुआ फिर से एक बार इमाद की तरफ से। Final 6 minutes, and it feels like the penalty shootout is right across the horizon, and that goes 50-50. It just could come down to that, but till the point, Shubham, if he scores a winner, this is going to be historic. He's going for a slow build-up, this time making sure he's left no corners unchecked. Final attack, 3 more minutes remaining. The end of the second half, and he does not want to give Imad the opportunity. He switches play from Hakimi towards Bellingham. He'll back pass again, find some space with Rudhulit. Where does he go next? Needs to find that through pass run, but that mistake again being committed exposes him to a counter attack. But there you go. The final whistle blows. And ladies and gentlemen, it has all boiled down to a penalty shootout. The fate of the Manjapara Tuskers lies on Shubham, and Northeast United will be the first ones to take the shot, and Shubham Wow. saves it. Second, Shubham with the score, 1-0 lead. केरला ब्लास्टर एफसी, जो उनको सबसे ज्यादा जरूरी था। दूसरा शॉट इस बार गोल स्कोर करेंगे और इमाद, उनको एक सेव की जरूरत है, जितना जल्दी हो सके उनको एक सेव निकालना ही होगा। It's going really close. If Shubham can make one more save, he could do it, but no. Imad has no intentions of letting him do so. But first, Imad needs to make a save over here. If that does not happen, you could see the tension. Now is the time, folks, to say your prayers. Shubham just 2 shots shy of securing a quite historic win against Imad. Is Imad still just managing to somehow find those goals? One more, and this could be it. This is it. It's come down to this moment. If Shubham saves this, it's done and dusted, set in stone, but no. One last chance. Shubham, you cannot afford to miss this one. Where does he go? Left, right, or center? And he goes for victory! And Kerala Blasters FC are still fighting through. It boiled down to the wire, but this man is made of steel. Has managed to keep them in the fight. Lok Manu has had his eyes closed. Still hanging on to that broken thread. But the Manjapara army, they are not willing to give up. At least yet. क्या मैच था, एक बार फिर से कहीं ना कहीं पैनल पे, चाहे लाइक पिछले गेम की भी अगर बात करें, चाहे पूरा सिमिलर कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है। पिछले गेम पे भी शुरू हुआ था, फिर पेनल्टीज में गया फर्स्ट गेम, और इस गेम पे भी हम लोग पेनल्टीज पे छाते हुए दिखे, बट इस बार कहानी चेंज होता हुआ दिखेगा इस बार, और इंडिविजुअल गेम इस बार आएगा भाई को-ऑप गेम की। केरल ब्लास्टर एफसी अगर ये को-ऑप गेम जीत जाते हैं, मैं कह सकता हूँ कि ये केरला ब्लास्टर एफसी वो शायद एक बेहतरीन कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि उनके अभी तक का अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो उनके को-ऑफ गेम्स पे ही हुए हैं। तो को-ऑफ गेम अगर वो हरा देते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को, जो कि वन ऑफ द बेस्ट, अगर वो बेस्ट नहीं है तो को-ऑफ गेम के अंदर उस क्लब को अगर हरा देते हैं,
देन मुझे लगता है जो डिसाइडर कोऑप होगा, उस पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा। हालाँकि वो अभी बहुत टाइम बाकी है, बट हाँ, उस राहों पे पहला स्टेप इधर रख चुके हैं शुभम केलर ब्लास्टर एफसी को लेके। It's still a long road ahead. The climb is getting even more tougher. Like you said, we go on to the game number 2 of the leg number 2. And this is where I think Shubham and Lokmanya realize that Saran Shen is getting into the picture. And they know Northeast United FC have been one of the finest co-op teams so far. And it is going to take so much more from Shubham and Lokmanya to try and win this one out. But what a game was it, folks! Sheer emotions and the way Shubham managed, especially when you're already under so much pressure, when you're 2-0 down against a player like Imad, you go for an equalizer, you go to extra time. It's mentally grueling, but still, that player decided never to give up as a reason, quite justifying the title of being the Viper of the eISL. But TD, at this point, I just want to sit back and enjoy this matchup because now it feels like the momentum train. I think Kerala Blasters FC are back again on, and we know what can happen if they make the right choices. They've been looking decent so far. I won't say they've been improving, right? I think they've done the work in the right direction in their co-op, but I think they have to be absolutely flawless if they have to best players like Emad and Saran Shen together. जी हाँ, फॉर श्योर लाइक एक चीज़ तो है कि वो इम्प्रूव काफ़ी ज़्यादा किए हैं बट अभी भी करना बाकी है एंड स्पेशली ऑन कोऑप गेम। कोऑप गेम के ऊपर उनका डिफेंस और उनका कोऑर्डिनेशन दोनों अगर और बेटर हुआ तो मे भी हो सकता है। और देखिए अभी जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि हाँ, हो सकता है एंड ऑल बट उनको करना होगा अगर उनको नेक्स्ट गेम पे जाना है देन। तो ये ज़रूरी है। बट एक चीज़ जो कि आज देख के लग रहा है शुभम के देखिए, इमाद को कितने चांसेस मिले 3-4 बार लाइक पोस्ट पे लगे 2 डोनारुमा की तरह से वो मैजिकल कुछ सेव्स यानी कि यस आज वाइब्स आ रही हैं शायद केरला ब्लास्टर्स एफसी जो है वो कमबैक करते हुए दिख सकते हैं और शायद एक सरप्राइज हम लोगों को ऑफ गेम पे भी देखने के लिए मिले। Yeah, I mean, the kind of a fairy tale they're writing for themselves and their fans. It's kind of unbelievable, right? Yesterday, after that 3-0 defeat, it is going to shatter the bravest of hearts. And it takes so much out of you. And Kerala Blasters FC have been taking those risks. Today, they got in Shubham to play first. And let's just assume, let's just, imagine that Kerala Blasters FC get through the co-ops also. Next up, it is going to be a matchup against Saranj. Now, two of the oldest veterans of the community, Lokmanu and Saranj, in a 1v1 showdown to decide the fate of both these clubs. Still right now, as things stands, Northeast United FC just one win shy of securing their berth in the grand finals. And I would still say they would not be feeling the heat, at least now. And even if it comes down to that, even if it comes down to that individual matchup, you know how good Saransh is. He's been in that same seat even in the last year. He was representing Chennai FC and he ensured that they become the champions. The defending champion is back again, defending his crown, and he's not going to let it go. But now, Kerala Blasters FC have become the hounds who are on a prowl, on a journey to again accomplish what has never been done before. And if they can do it tonight, like I said, it is a miracle that nobody is going to forget. And I urge all of you, friends, get your folks in to encourage others because tonight we are going to write history. Bengaluru FC have already secured the spot in the grand finals. Charanjot has made quite a vocal message. He said this out loud. I don't care who comes my way. I'm going to crush everybody. But in this matchup, it's a whole different storyline going on. Kerala Blasters FC, they are hanging from the edge of that cliff, but somehow still have their fingers intact. But it's just that one push they need from Northeast United FC to fall. And every effort that they've taken so far might go in vain.
Do the Highlanders have what it takes to seal the deal and go to the grand finals? Or is it going to be another history in the making for Kerala Blasters FC? Stay tuned to find this one out. सारांश एंड इमाद दोनों के दिमाग में यही चल रहा होगा लाइक ठीक है लाइक सिर्फ एक ही गेम जीतना है एंड वी कैन डू दैट लाइक वो चीज़ तो है लाइक इनके दिमाग में चल रहा है कि या लाइक जैसे कि आपने कहा कि वो अभी भी उतना ज़्यादा हिट जो है वो महसूस नहीं कर रहे होंगे बट ऑन द अदर हैंड केरला ब्लास्टर एफसी वो एक स्टेप तो चल चुके हैं और 2 स्टेप बाकी है सिमिलर लेवल पे पहुंचने के लिए एंड देन जाके कोऑप पे जो होगा वो तो बाद में ही देखा जाएगा अगर पहुंचते हैं देन बट सबसे पहला टारगेट आज इस गेम के ऊपर यही रहना चाहिए कि एटलीस्ट जो है उनके अटैकिंग थर्ड पे घुसने ही ना दे प्लेयर्स को क्योंकि अगर वो अलाउ करेंगे जैसे कि वो कल कर रहे थे लाइक वो थोड़ा डिफेंसिव खेल रहे थे वो अलाउ कर रहे थे कि आप आओ देन हम आपको टैकल करेंगे देन हो सकता है कि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाए क्योंकि आप देन सिर्फ और सिर्फ गोल कंसीड ना करने के लिए खेल रहे होंगे ना कि गोल स्कोर करने के लिए तो इधर थोड़ा सा बैलेंस अगर रख के खेले तो वो ज़्यादा बेटर होगा वी नो कि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है लेकिन एक स्टेप जब आप ले चुके हो बाकी 2 भी वो ले सकते हैं और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है शायद आज का कोऑप जो है वो केरला ब्लास्टर के लिए एक पॉजिटिव नोट के साथ एंड हो सकता है क्योंकि कल के दिन पे भी शायद जो स्कोर लाइन था वो 1-0 का था वो कुछ ज़्यादा खास बहुत बड़ा नहीं था और दोनों ही क्लब्स के तरफ से काफ़ी इवन और काफ़ी बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है वो देखने के लिए मिला था बट आज क्या वो रिवेंज ले पाएंगे आज क्या केरला ब्लास्टर एफसी कर पाएंगे रिवेंज स्टोरी शुरू तो हो चुका है बट एंड कौन करने वाला है वो देखना होगा Somebody needs to, I think Imad has to take that Rubik's Cube away from Saranch's hands and finish it. You've seen him, he's done that in some record time. One of the fastest scorers. I think one of the biggest concerns for Northeast United FC, the Highlanders, is they need to finish that Rubik's Cube. It's far from over. And Saranch needs to gather his chain of thoughts, but he realized that the match is on its way, and then there you go. Imad showing how it's supposed to be done. And can he finish it before we get the match started? That's a big question. Really quick with his hands there, and yeah, seems like he's on the right path for sure. Oh, all right, Imad. Almost complete. Almost complete. Yeah, done and dusted. That's how it's done, chap. वाओ All right. लाइक इतने टेंशन के माहौल में अगर आप थोड़ा बहुत कूल एंड चिल फील करा पाते हो सबको कहने की वो बेटर होता है एंड आई थिंक केरला ब्लास्टर एफसी लाइक उनके खेमे में थोड़ा बहुत चिंता जो है वो ज़रूर देखने के लिए मिल रहा है थोड़ा चिंतित ज़रूर है लेकिन लोकमेनू के ऊपर देखिए ये कोऑप अगर सरवाइव कर गए मुझे लगता है कि आज लोकमेनू जो है वो कुछ ना कुछ तो तैयार करके आए होंगे सरांच के लिए वी नो सरांच बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है बट वही एक्सपीरियंस इधर लोकमेनू के पास भी है वो भी बहुत सालों से इधर परफॉर्म करते आए हैं रिप्रेजेंट करते आए हैं अपने क्लब को अपने आप को तो कहीं ना कहीं जो है दोनों ही एक बिग क्लैश होने वाला है एंड वो क्लैश के जो आउटकम्स है वो तो तभी पता चलेगा लेकिन उसके पहले ये क्लैश जिधर कहीं ना कहीं चारों के चारों प्लेयर्स भिड़ने वाले हैं 2v2 के मंच पे एक तरफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड केरला ब्लास्टर एफसी ऑडियंस के लिए मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा वो चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो या फिर केरला ब्लास्टर एफसी के फैंस हो दोनों ही रेडी हो जाओ हो सकता है कि इधर कुछ सरप्राइज आपके लिए वेट कर रहा हो Yeah, I mean, surprise that I think the Manjabara Tuskers would be hoping that this happens tonight. You know, they win this co-op. Look, Manu defeats Saranch. They get to another co-op. They win again and head into the grand finals. And again have to face Bengaluru FC. So much going on. But for Northeast United FC, it's simple. Just win this game, get into the grand finals, and take your revenge against Bengaluru FC. That is as simple as it gets for them. And from here onwards, I think the players have finally taken their swords out. It is time, folks.
before we head in, all of you guys watching this broadcast, let us know, can KBFC clutch this one out also? Or is it going to be an easy win for Northeast United FC and they confirm their berth into the grand finals? ऑन द लाइन एक बहुत बहुत कहने के मुश्किल टास्क है केरला ब्लास्टर एससी के लिए, लेकिन उनको ये करके दिखाना होगा, उनके फैंस के लिए करना होगा एंड कहने के उनके क्लब के प्राइड के लिए भी। शुरू हो चुका है को गेम, इस पे भी डू और डाई सिनेरियो फॉर केरला ब्लास्टर्स। मौका बन रहा था शुरुआती में, एक गोल स्कोर करने की कोशिश था, हालांकि अभी भी खतरा नहीं डरा, बट फाइनली इधर केरला ब्लास्टर एससी डिफेंड करने में कामयाब रहे और कुछ देर के लिए तो खतरा अभी टल चुका है। लेकिन यही जो सरप्राइज अटैक्स है फ्रॉम द साइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, इसको अगर झेल पाते हैं केरला ब्लास्टर एफसी, देन आई थिंक उनका 50% काम तो उधर ही खत्म हो जाएगा। Oh yeah, I think initially what they really need to focus on is their defense. I think for Kerala Blasters FC, they will have to be always on that coiled up and attack mode, because again with R9, they will be looking for that cutback over there, but it's kind of an individual brilliance, trying to create some space with Ronaldinho going in. But look at Northeast United FC, they're fighting so much for that ball, but Kerala Blasters FC equally as good in terms of their defense. This is a really nice start. You could see both these clubs exchanging blows. It all comes down. Northeast United FC's attack and Kerala Blasters FC's defense for now. Very patient with R9, but somebody had to charge in, and there you go. So from here onwards, now that KBFC have gotten some possession, they needed to keep the ball on themselves. Cannot just cheaply give away the ball like that. Because look at this, with Ronaldinho, he would look for that extra pace, does not get it, and has been well dealt by Ashraf Hakimi. केरला ब्लास्टर एफसी लाइक बहुत सारे ऑलरेडी अटैक जो है वो झेलते हुए दिखे, हर बार उन्होंने डिफेंड भी किया है, लेकिन वो कब तक डिफेंड करेंगे? उनको अटैक पे जाना होगा। अगर वो हाई प्रेस तो छोड़िए, अभी के लिए प्रेस करना सबसे ज्यादा पहला रहेगा उनके लिए। इस बार शॉट भी लिया गया, वैंडेसार मौजूद थे, जिसके वजह से कोई भी गोल इधर स्कोर नहीं कर पाए। बट हाँ, पूरे 17 मिनट के गेम पे ये पहला टाइम ऐसा लगा कि केरला ब्लास्टर एफसी वो रियली थ्रेट दे सकते हैं इधर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को। Now it feels like the players are in cohesion with each other, playing in tandem for Kerala Blasters FC. But these relentless attack from Northeast United FC, and they go. Just spearheading the ball through, and there you have it, just like that. With a goal up, we could see, the attacking guile, and it gets converted. Get that sliver of an opening, and they capitalize, shoot and score, and KBFC on the back foot once again. वाह, क्या शानदार परफॉर्मेंस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से देखने के लिए मिला है। बट केरला ब्लास्टर एफसी लाइक उनका अभी के लिए तो नाम ही बन चुका है, कमबैक केरला ब्लास्टर एफसी, जो उनकी तरफ से हम लोग को बार बार देखने के लिए मिला है। पिछले गेम पे भी देखने के लिए मिला, 2-0 से पीछे थे, फिर शिवम 2-2 के, देन पेनल्टीज, एंड बहुत के बाद फाइनली जीतते हुए दिखे वो गेम। बट अभी तो सिर्फ और सिर्फ स्कोर लाइन है 1-0। क्या इधर से कमबैक कर पाएंगे केरला ब्लास्टर? वो तो नजर रखेंगे ही, बट इस बार के लिए कमबैक की तैयारी चल रहा था, बट मिस पास और इंटरसेप्ट होता हुआ दिखा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से। Yeah, I think at this moment, one thing for sure we can witness is KBFC are trying to play those longer balls, right? They're trying to go for a cross and then a score, then a shot. And I think at some point, Northeast United FC are going to get conditioned. Rather, Northeast United FC on the other side, what they're doing is they're going for those through passes, those strip-in passes. We've seen them try to initiate their play from the wings, look for the cutbacks, and even individually, that final third, they've been opting for a lot of skill. So the variations in attack from Northeast United FC have been much more in comparison to KBFC, and now they decide to go long. Just lob through, onto with Kylian Mbappe,
Gives it to Anna in a quick pass on towards Lionel Messi. The perfect angle for a Trivela, but decides against it. They do not want to just test their chances right now. Trying to go back and forth, but no. Ball stolen at a very important position. And there you can see the triggered run with Ronaldinho. The pass has been given for sure, but you could see the numbers of Northeast United FC clustering up right now. They've come back for defense, and now KBFC have to think of another way with Kylian Mbappe. Goes for a heel-to-heel and a shot! And there you go! The equalizer comes in! KBFC still dreaming, keeping their hopes alive. In such a clutch situation, score that equalizer. मैच ऑन, दोनों के दोनों अभी सेम पोजीशन पे आ चुके हैं 1-1 के स्कोर लाइन के साथ. एंड आई थिंक केरला ब्लास्टर ऐसे की तरफ से इतने दिन से जो परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने के लिए मिला है, इसी वजह से कहने के उनके लिए हमारा जो होप्स है वो हमेशा जिंदा रहता है. कल के दिन में गोल स्कोर करने का मौका नहीं मिला था, बट आज वो करके दिखाए हैं. कल जो रिजल्ट था वो शायद आज वो मानने के लिए राजी नहीं है. वो चाह रहे हैं जाते जाते भी हो इधर लड़ाई करके जाएंगे, फाइट देके जाएंगे, और वो बखूबी देते हुए फर्स्ट हाफ के आखिरी 4 मिनट बचा हुआ है. और ये 4 मिनट दोनों ही क्लब्स कोशिश यही करेंगे जितना ज़्यादा हो सके बॉल कंट्रोल पे रखो, अपने पास रखो, बॉल होल्ड करो, एंड अगर चांस मिल रहा है देन जाके गोल करो. क्योंकि फर्स्ट हाफ के खत्म होने के पहले कोई भी नहीं चाहेगा जो लेवल हो चुका है स्कोर उस जगह से आप एक और गोल कंसीड करो. बट इस बार अच्छा खासा मौका है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के पास कि वो इधर से एक गोल स्कोर करे. पाटा नो, बॉल छीना गया है. केरला ब्लास्टर एफसी, क्या एक आखिरी अटैक उनके तरफ से देखने के लिए मिलेगा? ये फर्स्ट हाफ एंड होते होते फिलहाल के लिए काउंटर पे केरला ब्लास्टर्स टुवर्ड्स एम्बापे, बट नो मिस पास, और कहीं ना कहीं पहला हाफ इधर ही खत्म होता हुआ. Much better from Kerala Blasters FC. Now they're starting to take their chances down. They're starting to take some shots. They're finding that little room. But this is where I think Saranch and Imad, along with George, are going to be racking their brains together and trying to create some crevices on which they can deal the final blow. For sure, the Highlanders would not want to push this to extra time or penalty, because we have seen the kind of comeback that this club has the potential. Look, Manu, Shubham, they'll have to keep performing wonders. They know that they have to play similarly. One thing for sure, I think Northeast United FC will have to find a way back in to all those long balls that are coming through, that aerial threat. They're finding some space with that. But this time, do Kerala Blasters FC change it up? That's the big question. Still tied up, could be anybody's game, as now four of these players have gotten their game face on, and yes, off we go with the second half. With the second half begins, इधर एक चीज देखिए फिर से एक बार कहने की सेम जगह पे आके खड़ा हो चुका है कि केरला ब्लास्टर एफसी ये 45 मिनट्स उनको गोल स्कोर करना है और कंसीड नहीं करना है. ये सेम चीज़ उनके लिए कंटिन्यू रहेगा. वो तीसरे गेम तक अगर वो इस गेम को सर्वाइव कर जाते हैं तो अभी तक अगर देखा जाए, देखिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से काफ़ी गेम बेहतरीन देखने के लिए मिला है. कुछ टाइम पे अटैक उनकी तरफ से बहुत बेहतरीन बनता हुआ दिखा है. बट एक चीज़ जो मुझे लगता है कि मिसिंग रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से, वो है वो कॉन्स्टेंट प्रेसिंग जो हम लोग को कल देखने के लिए मिल रहा था. आज वो नहीं दिख रहा, क्योंकि केरला ब्लास्टर का डिफेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है. देखिए एक बार फिर से रन पे बॉल छीना गया. थियो वर्सेस हकीमी, एंड हकीमी बॉल जीतते हुए देखने के लिए मिले. बट इस बार काउंटर पे क्या निकल पाएंगे? बट नो, विद मार्टिनी. बेहतरीन एक डिफेंस का प्रदर्शन. दोनों ही क्लब अपने डिफेंस को एक अलग लेवल पे लेके जा चुके हैं. At this point, I felt had he just gone through, this could have been another goal. But Northeast United FC, they're not just going to easily concede like that, right? And now you could see those build-ups coming up, playing a little box-to-box with Kylian Mbappe, goes for a heel-to-heel, but yes, you need to go for these aggressive tackles. You just cannot dance to the Highlanders' groove. You have to start controlling the tempo, and I think that is what KBFC is doing. Again, commencement of the second half, you cannot say the
scales are tipped in one club side, right? It's been back and forth. There's Ruud Gullit to Bellingham. He's trying to find some space with Ronaldinho. Does have with Mbappe, takes that shot. Why? Did have some room for maybe a heel to heel and could have created some more angle. Could have performed a skill move. This was a golden chance. And it was squandered. This might come down to haunt Lokmanu and Shubham. Whosoever was on the controller, but go for a longer one, this one. But no. Out for a goal kick. इस गेम के अंदर जिस तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा है दोनों ही क्लब का, एक चीज तो क्लियर है, शायद हम लोगों को आखिरी मिनट पे हो बट शायद एक विनर देखने के लिए मिल जाए। ये मे बी पेनल्टीज तक ना जाए और एक्स्ट्रा टाइम तक ना जाए, क्योंकि जिस तरीके से अटैक कॉन्स्टेंटली किया जा रहा है दोनों ही साइड से, कोई ना कोई एक तरफ जो है वो एक विनर शायद मिलने के चांसेस बन जाएंगे। और अगर वो केरला ब्लास्टर एफसी हो दैन उनका जो फेरी टेल है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। बट एज ऑफ नाउ मौका बन चुका है विद एम्बापे, केरला ब्लास्टर एफसी थोड़ा ज्यादा होल्ड करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, अभी भी खतरा नहीं टला। नो, मुझे लगा थोड़ा ज्यादा ओवर लेके चले गए विद एम्बापे। आप कटिंग कर सकते थे, आप पास दे सकते थे टू मेसी, बहुत कुछ हो सकता था, बट एक ग्लोरियस चांस इधर मिस करते हुए देखिए केरला ब्लास्टर एफसी। This is where they're kind of messing up, and I feel if they keep on doing this, Northeast United FC are gonna punish them, put an end to their misery, put them to sleep, a sleep where there is no tomorrow. But for now, Northeast United FC are a little rattled, a little shaken, of course. Kerala Blasters FC starting to look threatening, but still not clinical in terms of those finishes. Still making those mistakes in that final third, which could be coming down to hurt them at a point. Because now Northeast United FC, nice move with Ronaldinho, takes a shot, but Virgil van Dijk out of nowhere just puts his legs in there and goes for the save. Oh, touch too heavy. And again, Northeast United FC, the Highlanders, have retrieved the ball. So much space for Mbappe there as he paces down that right wing, cuts through the defenders, but Theo Hernandez saves it away. Final 14 minutes to go, and we are yet to find the winner of this game. आखिरी 13 मिनट बाकी है और ये 13 मिनट्स कहने के डिसाइड करेगा फ्यूचर ये दोनों ही क्लब्स के। हालांकि दोनों क्लब्स के कहना तो अभी गलत होगा, क्योंकि अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं, बट हाँ केरला ब्लास्टर एफसी का जो फ्यूचर है eISL सीजन 2 के अंदर वो डिपेंड करने वाला है ये मे बी 10 मिनट के ऊपर। और अगर 10 मिनट तक कोई भी गोल किसी की तरफ से भी नहीं आता देन हम लोग एक्स्ट्रा टाइम पे जाते हुए देखेंगे। बट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड बॉल छीनने में कामयाब रहे विद लियोनेल मेसी टुवर्ड्स बेलिंगम। बिल्डअप होता हुआ आई थिंक थोड़ा स्लो बिल्डअप करना चाहेंगे इस बार, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को पता है 82nd मिनट ऑलरेडी हो चुका है क्लॉक के ऊपर और इधर से कोई भी एक गलती उनके लिए भारी पड़ सकता है। बट वो गलती नहीं, वो गोल करेंगे और उसके साथ शायद ये विनर हो सकता है। 2-1 का स्कोर लाइन। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड अपने कोप गेम पे हर बार उभर के आए हैं, एक बार फिर से सेमीफाइनल लेग 2 के अंदर भी उभर के आते हुए दिखे। क्या ये विनर है वो ही देखना होगा, बट प्रेशर का माहौल छा चुका है केरला ब्लास्टर एफसी के ऊपर। Yeah, certainly has to be that moment, and it was coming, right? Kerala Blasters FC, when they had the chance, when they had that window of opportunity, they missed it on multiple occasions. And Northeast United FC say thank you and sit down as the Highlanders flying high again en route to their first grand final in the eISL. And when it was much needed, this is where Kerala Blasters FC go all out. But you could see this is a match not for the faint hearts. We've seen Kerala Blasters FC rising from the ashes, not just once, but multiple times.
Can they do it again? That's the big question. But Northeast United FC, I'm pretty sure they're going to rally their defenses back. I think they would be going for a 5-4-1 ultra defensive style of play and will try to restrict with barely single digit minutes remaining on the clock. 6 minutes to go on attack, or at the very max 2 remaining. Kerala Blasters FC out to achieve the impossible once again, and seems like they're set on the wrong course. Oh my god, like आखिरी 4 minutes केरला ब्लास्टर्स एफसी उनके लिए कहीं ना कहीं eISL सीजन 2 हर एक सेकंड के साथ वो ट्रॉफी जो उनके पीछे रखा हुआ है वो दूर जाता दिख रहा है. 2 मिनट और उसके साथ एट ए टाइम मोस्ट प्रोबेबली 1 मिनट का देखने के लिए मिल जाए. बट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वो बॉल इधर छोड़ने के लिए नाराज. एक और अटैक आ चुके हैं पहले. ओह माय गॉड, इधर एक गोल पोस्ट में शॉट लेते हुए, बट फिर भी बॉल मौजूद है इधर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के पास और वो कॉर्नर लेने के लिए भी पूरा टाइम ले रहे हैं. तो इससे एक चीज तो पता चल रहा है, चांस नहीं देंगे एंड खेलेंगे फिजिक. ओह माय गॉड, This full-time whistle, the hopes of Kerala Blasters FC go down the drain, but the boys had fought so valiantly till that winner scored by Northeast United FC, and they have to bow out as Northeast United FC, folks, are your second grand finalists. The stage has been set. We know we're going to see that epic showdown come into play. But what a match it was. Just when you thought that Kerala Blasters FC were tying the strings together, the strings of hope, those mistakes are certainly going to haunt them. And Northeast United FC just maintaining that composure, getting that one shot and making it count. The winner scored, and they go through, marching into the grand finals as they seek revenge from Bengaluru FC. with that the Bangalore FC, like उनको भी पता चल चुका है कि उनके जो ओपोनेंट्स है ग्रैंड फिनाले पे वो कौन होने वाला है. और यही वो क्लब थे जिसके साथ कहीं ना कहीं मैच खेल के शुरू किए थे अपना कैंपेन. लाइक दोनों ही क्लब्स, अगर हम लोग बात करें वो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या फिर बेंगलुरु एफसी, इन दोनों ही क्लब्स का जो कैंपेन है वो शुरू हुआ था एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए, जिसपे पिछली बार तो बेंगलुरु एफसी आगे निकल गए थे. सीजे सरांच को एक सिंगल शॉट लेने नहीं दिए थे. आज वो सब कुछ एक जगह पे आके कहने के एक रिवेंज सिनेरियो क्रिएट करता हुआ दिख रहा है. नॉट ओनली रिवेंज, इस बार ऑन द लाइन वो ट्रॉफी है जो प्लेयर्स के पीछे रखा गया है. और ये है गाइस फाइनल स्कोर कार्ड सेमीफाइनल 2, 2 लेग लाइक सेकंड लेग के ये स्कोर लाइन देखने के लिए मिल रहा है. शुरू हुआ था पहला गेम 2-2 हुआ, देन पेनल्टीज में गया और पेनल्टीज में जाके 5-4 का स्कोर लाइन रहा, जिसपे शुभम क्लच करके दिखाए वो पेनल्टी मोमेंट पे. लेकिन उसके बाद कोऑप पे या जो बेटर टीम थे वो इधर जीते हुए देखा. हालांकि अगर केरला ब्लास्टर एफसी की गेम की बात करें देन उनके तरफ से आज बहुत सारा पॉजिटिवनेस था उनके कोऑप के ऊपर और उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया था. लेकिन वो इम्प्रूवमेंट आपके लिए कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि आपके पास सेकेंडरी कोई बैकअप नहीं था, ऑप्शन नहीं था. आप हार जाते तो बाहर चले जाते. बट फिर भी मैं कहूँगा बहुत अच्छा ट्राई था उनकी तरफ से. Yeah, you could see them, doing everything at their disposal. And they were ever so close. Especially even, most of you would go out and say in the second half, Kerala Blasters FC were looking more threatening, more attacking. They created so many chances. Defensively, they were good. But they lacked one thing, the ability to finish. And if you are playing so deep against Northeast United FC, you better be prepared for that counter-attack. And one chance was all it took for Saranch and Imad to seal the deal. And now Saranch goes on to face his own brother, CJ, in the grand finals. And this is where it gets bigger than ever. But it's time to go and head off to it, Suyash, who has a lot of questions for Northeast United FC.
And hopefully there's a lot of answers from these fine gentlemen. We have our second finalist of this season's eISL. It's Northeast United FC, courtesy Saransh and Imad. Guys, what was the plan? You didn't even allow him to play a single game up until this point, at least in the semis. I mean, the plan was to finish it off in the first game, but it didn't happen. Shubham played a great game. But yeah, we got it done in co-op. That's a strong aspect, so yeah. See, KBFC came hard at you in the first game. It went down to penalties. It was close. Was there a slight doubt that was planted in your mind after that first game? Yeah, to be honest, no. We knew that we're very strong in co-op, and yeah, we knew we'd get the job done, and that's what we did. Alright, now coming to the final, right? What kind of a game are you expecting from BFC? You know these guys, you've seen them play day in and day out. And who do you think you want to go up against in the final? I don't think it really matters. Of course, they're a great team. They've made it all this way. But you know, it's the grand final, so anything can happen. So it doesn't really matter who we face. Imad, does it help having someone like Saransh in your team who's had the experience of course, winning the eISL last season with another team? He knows the pressure situations. Does it help when you have someone like that in your team? Obviously, it's a simple answer, I guess. I mean, he's done this before, hasn't he? So yeah, hopefully his experience has helped us in the playoffs, obviously, and throughout the league. So yeah, just another final, just another game. Just another game. Alright guys, all the best for the final. There you have it. eISL Season 2, the final is between Northeast United FC and Bengaluru FC. Expect nothing less than a cracker, guys. Watch all the action on the Indian Super League YouTube channel as well as the eISL YouTube channel and the YouTube channels of Northeast United FC and Bengaluru FC as well. The final kicks off at 8 p.m. Stay tuned. It's back to you guys. Well, I saw that sly, cheeky answer from Saransh. He did not reveal his cards. He did not say who he was going up against. And this is where, you know, the doubt sort of raises. I want to see that epic showdown. I want to see the brothers go off against each other. I want to see that match where Saransh takes on CJ. But is it that going to happen? I don't know. TT, tell me, do you want that to happen or do you want to see CJ against Imad? आई थिंक देखिए मैं तो चाहता हूँ कि सीजे अगेंस्ट इधर सरांश हम लोगों को देखने के लिए मिले क्योंकि सरांश जिस तरीके से लाइक जैसे कि हम कह रहे थे लाइक कैंपेन का जो शुरुआत था एक सिंगल शॉट लेने नहीं दिए थे क्या आज सरांश आके वो 2 शॉट 3 शॉट 2 गोल 3 गोल लाइक वो स्कोर कर पाएंगे कि नहीं वो सब कुछ जो है वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा बट यस गाइस प्लेऑफ्स बिल्कुल लाइक आप लोगों के सामने आ चुका है ऑलरेडी डे 2 के अंदर हम लोगों को बहुत ही ज्यादा लाजवाब एक्शंस देखने के लिए मिले जिधर सेमीफाइनल 1 के लेग 2 आज देखने के लिए मिला था जिधर से बेंगलुरु एफसी क्वालिफाई कर गए थे फॉर द ग्रैंड फाइनल्स एंड जो आखिरी सेमीफाइनल 2 लेग 2 देखने के लिए मिला जिधर से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड अपना जगह बना चुके हैं ग्रैंड फाइनल पे वो होने जा रहा है 8 बजे तो आप सभी लोग रेडी रहिएगा और 8 बजे आप अभी लाइक आप कहाँ पे लाइक मंदिर पे बैठ के देखोगे या फिर कहाँ पे देखोगे आई डोंट नो आई नो कि आप लोग प्रे करने वाले हो आपके क्लब के लिए बट रेडी रहिएगा क्योंकि एक्शन बहुत सारा जबरदस्त होने वाला है It certainly is, right. It's already thunderstorms around here in Gurgaon and we can feel the tremors also. The earth is shaking. Saransh Jain has already savored this moment once in the past. It was just a year ago. He lifted this trophy. Is he going to lift it again? Or is it going to be Charanjot coming in and taking it all away with his brother, Saknik? We are all about to find that out after this short little break.